हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रिया एंड आज का जो वीडियो है वो है एक फुल ग्लैम मेकअप। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मेकअप स्टार्ट करने से पहले अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए, जो कि मैंने कर लिया है। एंड आई एम गोना स्किप दैट पार्ट और मैं प्राइमर से शुरू करने वाली हूँ। सो लेट्स डू दैट। Apply the primer generously on your face. So primer is done and I'm gonna start with doing my eyes and then after I'm gonna do my face. So my eyebrows are done and eyebrows कैसे करनी है उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जो कि मैं लिंक कर दूंगी अगर आपने नहीं देखी है तो। सो प्लीज डू वॉच इट। एंड क्योंकि आज का सेशन एक ग्लैम अप सेशन है, इसलिए आई एम गोना डेकोरेट माई आईज इवन मोर। उसके लिए मैं गोल्डन शेड यूज करने वाली हूँ। आई शेडो स्टार्ट करने से पहले अपनी आंखों के ऊपर फाउंडेशन लगाएं और उसको अच्छे से ब्लेंड करें। ब्लेंड करने के बाद मैं अपनी आंखों को ट्रांसलूसेंट पाउडर से डस्ट करूंगी। स्टार्ट करते हुए अपने इनर कॉर्नर से मैं कूल कलर्स यूज करूंगी एंड आउटर कॉर्नर्स के लिए मैं वार्म कलर यूज करूंगी एंड इन बिटवीन गोल्डन शेड का यूज करूंगी। Starting from outer corner of my eye, I'm gonna blend the remaining product into my crease. Doing the same thing to my another eye, blending and extending my eyeshadow to my crease. आउटर कॉर्नर्स हमारे आई के ऑलमोस्ट डन है। सो आई एम गोना स्टार्ट विद द इनर कॉर्नर। I'm taking the white shade from my palette and doing the inner corner of my eye. And I'm gonna blend this. Make sure your brush does not have the previous color. And blend everything very nicely. And for the mid section, मैं golden color यूज करने वाली हूँ। गोल्ड शेड को मैं सिर्फ अपने मिडिल सेक्शन ऑफ द आई में ही अप्लाई करूंगी। मेक श्योर यू हैव प्लेंटी ऑन योर ब्रश टू अचीव दैट स्पार्कलिंग आई इफेक्ट। And then I'm gonna blend this too. And today I'm going for a wing eyeliner for this party look. Alright, eyeliner is also done and the only thing is left is our face. So let's do that quickly. एंड अब मैं अपने फेस पे फाउंडेशन लगा रही हूँ एंड मेकिंग श्योर दैट आई कवर एवरी कॉर्नर ऑफ माई फेस। और अब मैं कंसीलर लगा रही हूँ अपने अंडर आई एरिया में। एंड नाउ पुटिंग सम ऑन माई फोरहेड, एक्सटेंडिंग इट on my middle section of the nose to my chin. Now blending, blending, blending. You know the drill. Now I'm just dusting my face with some translucent powder. Now I'm just contouring my face, starting from my cheeks, defining those cheekbones, and then to my forehead. And then to my jawline, making sure that it is very nicely contoured and defined. Now blushy blush to get that rosy cheeks. Blend, 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 and lots of smiles. Taking the lipstick in lighter shade as I want my eyes to be the show stealer. Now defining those lines with a lip liner.
एंड आई वॉन्ट दिस टू लुक मैट, इसलिए मैं इस पर थोड़ा पाउडर डस्ट कर रही हूँ सो दैट इट लूजेज इज ग्लॉसी शाइन. पाउटिंग इफेक्ट अचीव करने के लिए आई एम रीडिफाइनिंग माई लाइन्स विद द सेम लिप लाइनर. एंड हियर कम्स माई फेवरेट पार्ट. हाइलाइटर बाय गॉड पूरे मेकअप में जान डाल देता है. सो नेवर फॉरगेट हाइलाइटिंग योर फेस. स्टार्ट फ्रॉम योर चीक बोन्स एंड देन एक्सटेंड इट टू योर आईब्रोज. Then to your nose and your lips. अरे काजल तो मैं भूल ही गई, so I'm doing this step now. And a little mascara harms no one. And एकदम आखिर में I'm applying my falsies. And I can't make sure कि मैं मिरर में देखूँ या कैमरा में. Our face is fully glammed up and it is looking so fabulous. And now I'm gonna open my hairs and show you the full look. Thank you for watching the video and if you like the video please give me a big thumbs up. एंड आपको अगर कोई सजेशंस है या कोई टाइप की वीडियो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए बनाऊं तो प्लीज़ 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 वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा. आई रियली लव दैट. एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम